क्या करता है क्या कर रहा है ब्लू कलर का बैठा रहता है यार पहले इसको पता है 8 बजे उठता है पहले उठा कर कब उठता है 5 बजे उठा हां 7:30 बजे तक पढ़ रहा था 7:30 बजे तक पढ़ रहा था पढ़ रहा था और क्या टिफिन आना है उसके पहले पढ़ेगा पता है काम है बावन 6 बजे क्लास खुलेगी सर Good morning, everyone. We will start off with vectors. Heading vectors. To the first point, quantity को vector होने के लिए it needs magnitude, direction and what? It should obey the triangle law of vector. Okay, so that's the first point. For a quantity to qualify as a vector, it must have a magnitude, it should have a direction, and it should obey the triangle law of vector addition. It should obey the triangle law of vector addition. What is this triangle law? Is pretty much today's class. Okay, we'll try to focus and understand what is the triangle law. Okay, and why it is a triangle law, etc. Okay, so triangle law of vector addition. ये तीन चीज अगर सैटिस्फाई करेगा तभी वो क्वांटिटी वेक्टर है, नहीं तो नहीं. Clear? Magnitude, direction, and it should obey triangle law of vector addition. Please remember this. That, and for the same reason we say that current is a scalar quantity. Suppose the current is going from point P to point Q, it has a direction P to Q. It has a magnitude and what? Magnitude and direction, but it does not obey the triangle law, and so it is a scalar quantity. Okay. It has a magnitude, it has a direction, but it does not obey triangle law. Does not obey triangle law, and so it is a scalar quantity. ठीक है. अच्छा, और एक बात जो समझना है कि ऐसा नहीं है कि क्वांटिटीज या तो स्केलर होता है या वेक्टर होता है.
Okay, you also have something called tensor quantities. But what are tensors? We are not going into that. Okay, remember that you can physical quantities can be divided into scalars, vectors, and tensors. Tensor quantity क्या है? We'll talk about it when it is time. Okay. In fact, in some books they write scalar as a tensor of rank 0. Time manipulated. Vector as tensor of rank 1, and then you have tensor of rank 2, 3, etc. Okay. So mostly we talk in our syllabus about scalars and vectors, but you also should remember that there is a quantity called tensor quantities. What are tensor quantities? Something. Okay. So as of now, we are interested in this vectors. Okay. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है. The two ways to represent vector quantities. The first one is a diagrammatic method. Diagrammatically represent कर सकते हैं उसको. And the second one is analytically या फिर mathematically represent कर सकते हैं. Okay. Analytical और mathematical. ठीक है. तो diagrammatically से start करते हैं. How to represent a vector diagrammatically. ठीक है. So for diagrammatic representation of vector, we represent it by arrows. We draw arrows to represent a vector quantity. Why do we draw arrows? We need a length, which will talk about the magnitude, and we need a direction, which will talk about the direction of the vector. Okay. So please remember this. The vector quantity must have a magnitude and it should have a direction. So the length of the arrow, what is the diagrammatic representation? We represent it by an arrow. The length of the arrow is proportional to the magnitude of the vector. The length of the arrow is proportional to the magnitude of the vector. And the direction of the arrow will be same as the direction of the vector. Okay, the direction of the arrow will be same as the direction of the vector. The direction of the arrow is same as the direction of the vector. The direction of the arrow is same as the direction of vector. Go through it, please. Clear? अब लेंथ के बारे में अगर बात कर रहे हैं, okay, so we have to define a scale. Length कब define कर पाएंगे? जब एक scale define करें. If this much length is equal to this much magnitude, yes, come. That will be on time. Not a good thing to be late. Okay, so length जब define कर रहे हैं, तो अपन को क्या define करना होगा? Scale. Length define करने के लिए we need to define scale. And direction define करने के लिए क्या करना होगा? अपने कैसे direction define करते हैं? In direction define करने के लिए, when we are defining the length, magnitude का जब बात करें तो scale का बात करना होगा, और direction का जब बात कर रहे हैं तो reference का बात करना जरूरी है. ठीक है? तुम बोलोगे कि how do I market जो that shop, right, is let's say 100 meters from this place. So from this place becomes the reference. सिर्फ 100 मीटर बोलना तो is not sufficient. I cannot just say that horizon market is 100 meters from here. Is 100 meters. सिर्फ 100 मीटर बोलने तो क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. So we'll have to define the reference. 100 मीटर यहाँ से बाएं तरफ, 100 मीटर यहाँ से बाएं तरफ, तो यहाँ से बाएं तरफ is the reference. समझ आ रहा है? तो डायरेक्शन जब डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए we need to introduce scale, and to define direction we need to introduce the reference point or the reference. देखो समझ में आ रहा है? अगर सर एक पॉइंट का रेफरेंस देखा कोई के रिस्पेक्ट में, with respect to something. 100 मीटर यहाँ से बाएं तरफ is the reference. Okay. Go through it, please. I repeat it again. Vector quantity को magnitude होना चाहिए, direction होना चाहिए और triangle law होना चाहिए. Triangle law क्या है उसके बारे में बात करेंगे.
सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनता. It would still be a scalar quantity until it obeys the third one. ठीक है, टेंसर क्वांटिटी अभी we are not interested in it, we are only interested in vector. दो तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम से और एनालिटिकली, राइट, मैथमेटिकली. अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का बात. So suppose if I draw an arrow. Suppose this is the north direction, this is the east direction, and I draw this displacement arrow और फोर्स arrow. एक फोर्स वेक्टर में बनाने की कोशिश करो. एक फोर्स वेक्टर को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि 10 न्यूटन, द फोर्स इज 10 न्यूटन्स 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट, या 30 डिग्रीज from east towards north, 30 degrees from east towards north. ऐसा फोर्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो. देखो समझ आ रहा है. ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी पता है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई? इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ डायरेक्शन एंड इट ओबेज द ट्रायंगल. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ट्रायंगल और तीनों चीज होना चाहिए तभी वो वेक्टर बनता है, नहीं तो वेक्टर नहीं है. Okay, so I have to draw 10 Newton force vector 30 degrees from the east towards the north direction. Okay, so यहाँ पर अब arrow जो मैं बनाया वो कैसा मैं define करूँगा कि let us assume that 1 centimeter of the arrow is equal to 1 Newton. So this becomes the scale. तो ये जो arrow बनाना होगा वो कितना लेंथ का बनाना होगा? 10 सेंटीमीटर. I'll have to draw a 10 centimeter length arrow, and that would represent a force of 10 newtons. That would represent a force of 10 newtons. And what is the reference? East is the reference. East is the reference. Okay, एक reference से मेरे को direction define करना है. So east here becomes the reference. अगर scale नहीं दिया हुआ है problem में, suppose scale नहीं दिया हुआ है problem में, तो हमेशा assume कर लेंगे कि 1:1 है. If nothing is mentioned about the scale, we will assume it 1:1. You can write that down. If nothing is mentioned about the scale, we will assume it 1:1. अभी से कितना टाइम हो गया? तो चालू क्लास भी चालू नहीं हो रहा है. If nothing is mentioned about the scale, we will assume it to be 1:1. Clear है? यहाँ पर मैं बता दिया स्केल क्या है. एक न्यूटन फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एरो से. 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द एरो will represent 1 न्यूटन फोर्स. So I'll have to draw how much length of the arrow? 10 सेंटीमीटर, and that will represent 10 न्यूटन फोर्स. एंड डायरेक्शन के लिए रेफरेंस क्या डिफाइन किया? ईस्ट. ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है क्या फोर्स? नहीं, ईस्ट से है. कहां? नॉर्थ की तरफ. कितना एंगल? 30 डिग्री. ऐसा देखो समझ में आ रहा है. I have defined magnitude and I have defined direction. I have defined magnitude and direction. See if this is clear to you. समझ आ रहा है? From east towards north. East reference है, ये समझ में आ रहा है? With respect to east. Okay, with respect to east अपन direction define कर रहे हैं. किस तरफ? North की तरफ. East को reference मान के अपने north की तरफ move कर रहे हैं. With respect to east, north की तरफ move करें. कितना move करें? 30 डिग्री. तब वो मेरे को desired direction मिल रहा है. If I move towards north from east, if I move northwards by 30 degree, I get the desired direction. Okay. So to define the magnitude, you have to define scale, and to define the direction, you have to define a reference point. Okay. And then you can say that the vector ka description is complete. You can represent it diagrammatically. Reference starting point. Starting point नहीं. एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा कुछ ईस्ट विल टॉक अबाउट इट जैसे जैसे मूव करेंगे विल अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस क्या है, ईस्ट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मैं फोर्स का डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। गो थ्रू इट प्लीज। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके ग्रेट। If you have doubts, please ask. पूरा क्लास आज वही करेंगे। Okay, so force में define किया, force is a vector quantity, it has a magnitude, it has a direction, 10 newtons, 30 degrees north of it. 30 degrees north of it. Okay. Now we can define this arrow. ये जो arrow मैं बनाया, this is the head of the arrow, and this one is the tail of the arrow. ठीक है, ताकि थोड़ा सा बात करने में सुविधा हो। एक हेड डिफाइन कर दिया, एक टेल, सर और कुछ। ओके, हेड ऑफ द एरो एंड टेल ऑफ द एरो। Go through it, लिख लो, please keep writing down, please keep writing down stuff. ये जो तरीका है फोर्स को लिखने का, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ओके, वी कॉल दिस एज द पोलर फॉर्म। दिस इज नोन एज द पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ये एक मैथमेटिकल तरीका है। यहाँ पर मैं कैसे लिखा उसको, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। पोलर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। प्लीज रिमेंबर, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ऐसा, या फिर जो आलसी आदमी होता है वैसा लिखता है, मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, और बुक्स में कैसा लिखा होता है, एक डार्क, यू नो, a bold font. Bold font is used to represent a vector. Okay, that is how you represent a vector. How do you represent a magnitude of the vector? Magnitude of the vector, magnitude of the vector को symbolically, मैं सिंबल का बात कर रहा हूँ, symbolically कैसे represent करेंगे, दो vertical bars के बीच में। What do you mean by mod of, you call it as mod of vector या modulus of vector? What do you mean by mod or modulus? Magnitude. ठीक है, कई बुक में you know they just write it like this, just normal without any bold etc. Okay, go through it. We call it as modulus of vector or mod of vector. Mod or modulus of vector. What do you mean by mod or modulus of vector? Magnitude. क्लियर है? तो पोलर फॉर्म क्या हुआ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पहला मैथमेटिकल तरीका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। मॉड आर एंगल थीटा, मॉड आर एंगल थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ओके, मॉड आर इज फॉर द मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज फॉर द डायरेक्शन, की कौन सा कोई रेफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूमना है, कोई रेफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूमना है। मॉड आर एंगल थीटा, दैट इज नोन एज द पोलर फॉर्म। देखो डायग्रामेटिक तरीका समझ में आया या नहीं? length of the arrow is proportional to the magnitude and direction of the arrow is same as the direction of the vector. Go through it. Go through it. And then we go. अच्छा, ये जो वेक्टर आर लिखा है यहाँ पर, ये जो फोर्थ वेक्टर लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ 10 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये समझ लो। दिस इज 10 न्यूटन, आर यू क्लियर विद द मैग्नीट्यूड? रेफरेंस में क्या assume कर रहा हूँ, तो ईस्ट से कितना घूमे, 30 डिग्री, कितना तो घूमे नॉर्थ की तरफ, तब क्या डायरेक्शन मिलेगा, फोर्स। So I can write as 30 degrees north of east.
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और कैसा लिख सकते हैं इसको? आई कैन अज्यूम नॉर्थ एज द रेफरेंस। अगर नॉर्थ को रेफरेंस बनाए तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए किधर घूमना होगा? ईस्ट की तरफ घूमना होगा। कितना घूमना होगा? 60 डिग्री घूमना होगा। ठीक है, सो दैट इज 10 न्यूटन 60 डिग्रीज। So please do not confuse in this. Please do not confuse. समझ आ गया? अगर ईस्ट को रेफरेंस माने तो कितना रोटेट करना होगा? फोर्स का डायरेक्शन पाने के लिए 30 डिग्री घूमना होगा। इस तरफ घूमना होगा, नॉर्थ की तरफ घूमना होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? नॉर्थ को अगर रेफरेंस माने तो कितना घूमना होगा? 60 डिग्री घूमना होगा। किधर घूमना होगा? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो समझ में आया या नहीं? यहाँ पर रेफरेंस क्या है? ईस्ट। यहाँ पर रेफरेंस क्या है? नॉर्थ। समझ में आया? Go through it please. नहीं, ये लेंथ है भाई, 10 सेंटीमीटर में बनाया उसको रिप्रेजेंट कर। ये फोर्स है ब्लू वाला। क्लियर है? आगे बढ़ने लायक? यस। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट लिख दे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत माने ऐसे हल्के में ले लेते हैं। वहां पे जो 7 स्टेट वेट है उसका नाम हमें बस 7 सिस्टर्स, कुछ उसके बारे में बात पता ही नहीं है। पूछो कौन कौन सा स्टेट है तो नहीं बता पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को अपने बस जनरल टर्म यूज कर लेते हैं, राइट? नॉर्थ ईस्ट हियर you cannot use it so blatantly. Okay, in physics north east मतलब क्या होता है? North east is a very specific direction which is along the angular bisector. फिर इसको नॉर्थ, यस एग्जैक्ट 45 डिग्री दोनों होना चाहिए, तब जाके इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? तुम अपने पूरा इस चीज को नॉर्थ ईस्ट बोलोगे नहीं, only if it is 45 degree angular bisector is there, it is north east. तो नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट इज 45 degrees 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 45 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो दोनों चीज सही है। You cannot write down any arbitrary direction in the first quadrant as northeast. Northeast in physics is a very particular direction. Which one is it? The angular bisector, 45 डिग्री वाला लाइन। समझ आ रहा है? ये दोनों 45 डिग्री है, ये 45 होता है, पता है? तो ऐड होके 90 होता है, तो आधा आधा 45। एक नॉर्थ से 45 है ईस्ट की तरफ, और दूसरा क्या हुआ? ईस्ट से 45 है नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? समझ में आया? बोलो क्या चीज होता है? हंड्रेड टेंसर क्या होता है वो अभी अब तक बात नहीं की, खाली ऐसे मैं स्टाइल मारने के लिए बोल टेंसर लगे कि मेरे को काफी आता है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ बोलो। 30 degrees from the 30 degrees northeast of east. नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्ट, बट वो तो डिवाइड नहीं कर रहा 45 नॉर्थ ईस्ट नहीं ले सकते। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ कौन सा डायरेक्शन है? जो 45 डिग्री वाला। तो उसके रेफरेंस डायरेक्शन के लिए उसके रेफरेंस नहीं लिखे तो अच्छा है। जनरली जो रेफरेंस अपने अज्यूम करेंगे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करेंगे। नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसे ऐसे फिर तो चलते जाओ, तो जैसा मानो तो फिर तो चार जो अपने रेफरेंस मानते हैं वो नॉर्थ या ईस्ट या साउथ या वेस्ट, व्हिच इज लॉजिकल। समझ में आ रहा है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके ग्रेट। द नेक्स्ट पॉइंट, so if I assume a north and east and a south and a west, and I want to draw a displacement vector भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। Okay, the displacement vector is 20 meters and let's say this angle is 30 degrees. कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब क्या? 1:1 का स्केल है, 20 मीटर का लेंथ है और 20 मीटर का ही एरो है। 20 मीटर ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है और 30 मीटर ही लंबा एरो। Okay, so this is what displacement vector. I am drawing the displacement vector. 20 meters, what? North of east.
अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, मैं अगर ऐसा एरो बनाया, व्हाट विल दैट रिप्रेजेंट? व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट भी तो 20 मीटर ही है। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये दोनों का लेंथ सेम है और एंगल भी उतना ही है, तो दिस विल आल्सो कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन, यस और नो? 20 मीटर लेंथ, 30 डिग्री एंगल। इसको एरो को थोड़ा सा मैं पीछे लेके अगर, तो क्या बदल जाएगा क्या? नहीं, 20 मीटर लेंथ, 30 डिग्री एंगल। प्लीज रियलाइज, मैं कैसा भी एरो बना दिया, इस एरो को, ये ब्लू वाला एरो को मैं कैसा भी शिफ्ट किया, दे विल ऑल कन्वे व्हाट? सेम इंफॉर्मेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन विल दे कन्वे? 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं किधर भी एरो बना दिया, they will all convey the same information. See if this is clear to you. So all these arrows represent same displacement. All these arrows will represent the same displacement. So it is a very, very important property. We call it as shift independent property. नहीं समझ, पहले ही ना बोलिए, मेरा स्टेटमेंट भी खत्म नहीं हुआ, नहीं समझ, नहीं बोलते ही ना। ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, 30 डिग्री, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे होना चाहिए ये एरो। तुम अगर इस पॉइंट में हो और इधर मूव किए 20 मीटर, तो भी तो वही डिस्प्लेसमेंट किए, 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर हो तुम, अगर ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और तुम ऐसा मूव किए, तो तुम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? वही लिखोगे, 20 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑल दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सेम इंफॉर्मेशन। सब एरो एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है भाई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री। We call them as equal vectors. What do you mean by equal vectors? Same magnitude, same direction. Same magnitude and same direction. They convey what? They convey the same information. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शिफ्ट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। शिफ्ट, very very important, shift independent property. What is shift independent property? A vector can be shifted in what manner? कैसे शिफ्ट किए सब वेक्टर्स को? पैरेलल टू इटसेल्फ। ऐसा थोड़ी कि इसको ऐसा घुमाकर ऐसा रख दिया, फिर तो अलग हो गया, फिर तो 20 मीटर नॉर्थ हो गया। इसको उठाकर ऐसा रख दिया अगर, तब नहीं हुआ इक्वल वेक्टर। समझ आ रहा है? फिर ये क्या बन जाएगा? इस एरो को उठाकर अगर ऐसा रख दिया तो 20 मीटर नॉर्थ होनी चाहिए, वो तो फिर अलग इंफॉर्मेशन हो गया। So what is the idea of shift independent property? If a vector is shifted in what manner? Parallel to itself, then it conveys the same information, and this property is known as shift independent property. सर जब पैरेलली इस कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी एरो बनाते हैं, उस जगह पे एक और कार्टेशियन प्लेन बन जाता है और फिर सेम ही ऑपरेट। Shift independent? Yes. लिख लो. If a vector is shifted, किस प्रकार से? Parallel to itself. If a vector is shifted parallel to itself, if a vector is shifted parallel to itself, then what? तो क्या होता है? Its property remains unchanged. अभी भी वो सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहा है. Its property remains unchanged. Its property remains unchanged, and it conveys the same information. It conveys the same information. Okay, if the arrow is shifted parallel to itself, its property remains unchanged. Vector shifted लिख दो या arrow shifted लिख दो, एक ही बात है. If the arrow is shifted parallel to itself, or if the vector is shifted parallel to itself, its property remains unchanged. It conveys the same information. What is this property known as? Shift independent property. और जो वेक्टर्स ये प्रॉपर्टी ओबे करते हैं उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, आजाद आजाद पंछी होते हैं, वैसे आजाद वेक्टर्स। ओके, वी कॉल सच वेक्टर्स एज फ्री वेक्टर्स। का मतलब क्या? अगर मैं वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट किया तो वो सेम ही इंफॉर्मेशन ओबे कर, सेम ही इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा। उस टाइप के वेक्टर्स को हमने बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। Most vectors that we talk about will be free vectors.
ठीक है, most vectors that we talk about, displacement, velocity, acceleration, most of them are free vectors. But इससे और एक पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे भी वेक्टर्स होंगे जिसको पैरेलल भी शिफ्ट करना अलाउड नहीं होगा, है ना? प्लीज रियलाइज दिस, कैन यू शिफ्ट अ वेक्टर नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ? ये शिफ्टिंग तो अलाउड ही नहीं है. दिस शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड. व्हाई? They will represent different information. These two are different information. What is this? 20 meters? Not. So can you shift vectors not parallel to itself? No. ठीक है, क्या रूल है? You can shift the vectors parallel to itself and they will represent the same property. They will represent the same information. But some vectors ये वाला property भी obey नहीं करते हैं. कुछ vectors करते हैं और उन vectors को क्या बोलते हैं? Free vectors. तो free vectors का उल्टा होगा bounded vectors या forced vectors. Opposite of free vectors is known as bounded or free or forced vectors. B-O-U-N-D, bounded or forced vectors. What is bounded vector or forced vectors? They're not allowed to shift even parallel to itself. You cannot even shift them parallel to itself. शिफ्ट करोगे, पैरेलल भी शिफ्ट कर दोगे तो भी वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देगा. एग्जांपल अभी नहीं करेंगे. ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? बोलो. फ्री वेक्टर, all I can say that all equal vectors would have to be free vectors. Yes. All equal vectors would have to be free vectors. और free vectors are not. दोनों सेम ही रह रहा है अपने हिसाब से. इक्वल वेक्टर्स और ये फ्री वेक्टर्स दोनों सेम रह रहे हैं. बोल सकते. तो ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा वो डेफिनेशन के अंदर मान नहीं जाओ, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना. यहाँ 11-12 लेवल पे, एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल पे डेफिनेशन डिफाइन फ्री वेक्टर ऐसा जीवन में नहीं पूछे. ये पूछेगा कि भाई तुमको फ्री वेक्टर क्या है, वो समझ में आता है क्या, वो पता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन. राइट, तो समझने पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा डेफिनेशन को लेके इन्फैचुएशन नहीं. What are bounded vectors? They are not even allowed to shift parallel. They would change the property even if they are shifted parallel. Take a look. Not allowed to shift even parallel to itself. Go through it. Go through it. Doubt है तो पूछो. What are equal vectors? Vectors with same magnitude and same direction. Okay. What is this property known as? Shift independent property. Shift independent property. What is the shift independent property? You can shift the vector parallel to itself without changing its definition. Definition अभी भी वही रहा vector का, क्या रहा? 20 meters, 30 degrees north of east. Same definition रहा. Clear है? आगे बढ़ते हैं. We go through. अरे bounded vector shift parallelly then we will change the property. समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. पहला क्लास वेक्टर. ठीक है, पहला मैं सिंपल से बस ये पढ़ा हूं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सर बाउंडेड वेक्टर का एग्जांपल क्या है? करेक्ट. अभी मैं ऐसे खुला छोड़ रहा हूं, माने नो आई एम लीविंग लूज एंड्स. ठीक है, आई एम पर्पसली लीविंग लूज एंड्स सो दैट you can process things. Okay, सब चीज का आंसर मैं इमीडिएटली दे दूंगा तो there will be no room left for your imagination and for your intelligence to process it. Are we clear with this? Yes. Yes. So I would want you to think what can be an example of bounded vectors. Force is an example of what? Free vector. now पे मत जाओ कि force है तो force vector होगा नहीं. Force is the free vector. Please write down. Force is the free vector. Most vectors that we will talk about are free vectors. Yes. The current is vector of नहीं, ये तुम जब आया था उसके पहले हम लोग डिस्कस करो. ठीक है, नहीं स्केलर को
Current is the scalar quantity. ठीक है, आगे बढ़ो. Can we move forward? अब सपोज तुम पॉइंट ए से स्टार्ट के मूव करना और तुम ऐसा मूव कर रहे हो. You are drunk, you are high, and you are moving in this direction. जैसा भी कर सकता है, कोई बात नहीं, सब गलती माफ. हाँ, right? So suppose you are moving in that manner, and someone takes a snapshot to forward it to your parents when you are at B, okay? And then you finally roam around and you finally reach this point C. Okay? What is the distance covered in the journey, in the entire journey? Length of, let's assume that this is the first part of the journey. Photo खींचे जहाँ पर, and then this is the next part of the journey. Beautiful. So I can say that the distance covered in the journey AB will be the length of the line AB, length of the arc AB. ऐसा बनाएंगे. ऐसा क्या होता है? Arc length. Okay. This is the distance in the journey. Distance in the journey A to B. Okay. And what is it? Let's assume that this is 10 meters. Let's assume this is 10 meters. And what is BC? This is the distance in the journey B to C. ये दोनों क्या क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? डिस्टेंस का बात करें यार, स्केलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब स्केलर. यस, तो ये डिस्टेंस अज्यूम कर लो 40 मीटर है. कैसे मेजर करेंगे? ऐसा घुमा फिरा हुआ अजीब सा लेंथ. ये लेंथ अगर मेजर करने में बोलूं तो कैसा करोगे? थ्रेड से तो वो ये होगा रिवर का ऐसा वो लेंथ मेजर, राइट? तो टोपो शीट्स टाइप, राइट? लेंथ ऑफ द thread. Okay. So what the total distance? 50 meters. This addition is a scalar addition. This addition was a scalar addition. मैं अगर total distance पूछा, total distance में अगर पूछा, तो तुम सिर्फ length of the arc AB plus length of the arc BC कर दिए और 10 plus 40 करे तो 50 मीटर आ गए. ये दोनों. Okay, ये दोनों addition is the scalar addition that you have. Scalar addition. Now, if I ask you what is the displacement in the journey A to B, what would you say? Displacement in the journey A to B. Displacement in the journey A to B. Straight line from A to B. Displacement is defined as straight line from A to B. Shortest distance, etc. Okay. But what is the displacement in the journey B to C? B to C straight line. Let's assume this is the displacement in the journey A to B. And let's assume this is the displacement in the journey B to C. Now if I ask you what is the net displacement, what would you answer? Straight line from A to C. The displacement in the entire journey, अगर मैं पूछूं, will be the straight line from A to C. Do you see a triangle forming up? ये हर बार होगा. जब भी दो वेक्टर ऐड करने की कोशिश करेंगे, हर बार एक ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा. And that is why we introduced the rule कि वेक्टर होने के लिए ये होना जरूरी है. Magnitude, direction, and it should obey triangle law. एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना. Every time we try to add vectors. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? Displacement in the journey A to B. उसको कैसे मैं represent किया? वेक्टर A B से. वेक्टर को ऐसे एरो बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में, या मैं इसको स्मॉल ए भी लिख सकता हूं. फिर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन द जर्नी बी टू सी. क्या होगा? वेक्टर बी सी या स्मॉल बी लिख लो. अब मैं पूछ रहा हूं नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें? ए टू सी. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. सो द टोटल नेट रिजल्टेंट displacement will be given as what? Will be given as vector AC, which is nothing but, let's say, vector R. So vector R can be written as vector A plus vector B. This plus is a more difficult plus to do. It is not like scalar plus. This was a scalar addition. यहाँ पर we are trying to add what? दो vector quantity को add करने की कोशिश करें. This addition is known as vector addition.
this vector, this addition is vector addition. Why is it difficult? Because please realize जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ इस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शंस क्या है इस दो वेक्टर्स का वो भी डिसाइड करेगा रिजल्टेंट. Whenever we try to add two vectors, a triangle will form up. And so we define the rule called triangle law. Triangle law of vector addition. Why is this addition more difficult? Because it involves direction. A और B का direction क्या है वो भी contribute करेगा क्या चीज decide करने में, R कितना है, R कितना है, resultant कितना है, उसको डिसाइड करने में A और B का मैग्नीट्यूड का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही, डायरेक्शन का भी कंट्रीब्यूशन. These are the points. लिख लो points. Whenever we try to add two vectors, whenever we try to add two vectors, a triangle forms up. Whenever we try to add two vectors, a triangle forms up. Right? A triangle forms up. A triangle forms up. Full stop. Next point. Vector addition is more complex than scalar addition. Scalar addition में सिर्फ कौन involved था? इसमें कौन involved है? Magnitude तो है ही, direction भी involved है. Vector additions are more complex than scalar additions as they involve both magnitude and direction. Vector addition are more complex than scalar addition as they involve both magnitude and direction. As they involve both magnitude and direction. तो ट्राइंगल लॉ क्या चीज है, अब ये समझ रहे हैं. ट्राइंगल लॉ, द आइडिया इज इट इज अ डायग्रामेटिक टूल. ठीक है, एक डायग्रामेटिक तरीका है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने. ठीक है, डायग्रामेटिक रूल, इट इज अ डायग्रामेटिक रूल टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, इट इज अ डायग्रामेटिक रूल. Please write it down. Triangle law is a diagrammatic rule to represent what the resultant of two vectors. क्यों डायग्राम का सपोर्ट चाहिए मेरे को? यहाँ पर एडिशन करने में तो कोई डायग्राम का सपोर्ट नहीं चाहिए था. अगर कोई मेरे को 10 मीटर और 40 मीटर दे देता तो मैं बता देता 50 मीटर टोटल डिस्टेंस है. अब यहाँ पर डायग्राम का क्यों नाटक हो गया? क्योंकि वेक्टर बाउंड्री को जब ऐड कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, यू नीड अ डायग्रामेटिक टूल. लिख लो, एज डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड वी नीड अ डायग्रामेटिक टूल. लिख लो प्लीज, सब पॉइंट्स लिखते जाओ. एज डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड वी नीड अ डायग्रामेटिक टूल टू फाइंड द रिजल्टेंट. As directions are involved, we need a diagrammatic tool to find the resultant. ठीक है, और इस टूल को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस टूल को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अभी हम क्यों ट्राइंगल लॉ? क्योंकि हर बार जब दो वेक्टर को स्क्वायर लॉ क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जब दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा एक ट्राइंगल बन के बाहर आ जाए, अपने आप एक ट्राइंगल बन के बाहर आ जाए. इसलिए ट्राइंगल लॉ. क्यों जरूरत है एक डायग्रामेटिक रूल का? क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है. इसलिए ये एडिशन डिफिकल्ट है. स्केलर एडिशन जितना आसान नहीं. 10 और 40 50 हो, यहाँ पर 10 और 40 50 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. क्या होगा वो समझना. What is the triangle law? Let's understand. Please listen it through. The two vectors that I have to add are represented as what? Two sides of the triangle in the same sense. Same sense. Sense बोले तो? Sense होते ना तो clockwise है.
and anti-clockwise. Sense मतलब जानते हो घड़ी जैसा घूमता है, clockwise sense and anti-clockwise. Not the common sense and the non-sense, right? Anti-clockwise and clockwise sense, right? These are the two senses, clockwise and anti-clockwise. The two vectors that I have to add must be represented as what? Two sides of the triangle in the same sense. Then what? Then the resultant is represented as the third side of the triangle in the opposite sense. Write down the statement of triangle. If two vectors are represented by, two sides of a triangle, if two vectors are represented by two sides of a triangle in the same sense, if the two vectors are represented by two sides of a triangle in the same sense, then what? Then the resultant, then the resultant is represented by what? Third side of the triangle. Then the resultant is represented by the third side of the triangle. In what sense? In opposite sense. Then the resultant is represented by the third side of the triangle in opposite sense. तो सब सेंस पे समझ नहीं आ रहा, सेंस है ही नहीं हम लोग, कहाँ समझ में आएगा हम लोगों को? If two vectors are represented by two sides of a triangle in the same sense, then the resultant is represented by what? The third side of the triangle in opposite sense. The resultant is represented by the third side of the triangle in opposite sense. यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो, वेक्टर ए और बी जिसको जोड़ रहे थे वो सेम सेंस में था, कौन सा सेंस था यहाँ पे? क्लॉकवाइज. अब जो रिजल्टेंट है वो तीसरा साइड से रिप्रेजेंट करेंगे. अब एरो किधर बनाए, लेफ्ट या राइट? एरो को किधर इधर एरो बनाए या इधर एरो? हेड हेड इस तरफ. क्यों? तभी ऑपोजिट सेंस होगा, नहीं तो सेम ही सेंस हो जाएगा. अगर मैं ब्लू वाला एरो को लेफ्ट वर्ड मार्क कर दिया तब तो तीनों ही क्लॉकवाइज हो जाएगा, नहीं कि वो. With the two vectors, and it is logical. It is logical if you think a bit. It is logical. मैं suppose point A से start किया, मैं पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यही तो हुआ. नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूँ कि तुम A से स्टार्ट किए, यहाँ पे गए B पर, फिर यहाँ पर आए, तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? इतना ही तो है. From A to C, the resultant displacement is from A to C. If two vectors are represented by two sides of the triangle in the same sense, then the resultant is the third side in opposite sense. Go through please. यही समझना है, आज पूरा क्लास में एक ही काम है, ट्रायंगल और समझना. और एक एग्जांपल है, सपोज एक वेक्टर ए ऐसा है और एक वेक्टर बी ऐसा है. रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करो, देखो. Draw the resultant and show it. ये दो वेक्टर है, एक ए एक बी. रिजल्टेंट वेक्टर बताओ. थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैसा बना है? एरो डाउनवर्ड या अपवर्ड्स? अपवर्ड्स. डाउनवर्ड हो गए. क्यों नहीं होगा? The two vectors are not joined in the same sense. दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं. पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, the two vectors that we are adding must be in the same sense. यहाँ पर A कौन सा सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज. B कौन सा सेंस में? क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज पता है कि नहीं पता है? क्लॉकवाइज घड़ी जैसा, घड़ी का कांटा जैसा चलता है, और एंटी मतलब उसका उल्टा. तो A और B तो उल्टा सेंस में है, नहीं कर सकते इसमें. कोई भी ट्रायंगल बस कंप्लीट करके थोड़ी रिजल्टेंट बना सकते हैं. रूल है, क्या रूल है? The two vectors that ये वेक्टर ए एज इट इज बना दिया, ये वेक्टर बी को मैं शिफ्ट किया यहां से. ऐसा करना अलाउड है क्या? क्यों? शिफ्ट. We are shifting the vector parallel to it.
पैरेलल शिफ्टिंग अभी किए थे ना, a vector can be shifted parallel to itself without changing its property. We call them as three vectors and the property is known as shift independent property. ये भी वेक्टर B है, इक्वल वेक्टर ही है। क्यों इक्वल वेक्टर है? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। Now the two vectors are in the same sense, yes or no? Yes, sir. देखो ये समझ में आया नहीं? मैं कौन सा रूल यूज किया यहाँ पर? वेक्टर B को शिफ्ट किया, I use shift independent property. And now the two vectors A and B are in the same sense. कौन सा सेंस है दोनों का? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। पहले थर्ड साइड बना लो, अब सेंस डिसाइड करेंगे। ऑपोजिट सेंस, ये दोनों एंटी क्लॉक है तो इसको क्लॉकवाइज ऐसा बनाना है, तो दिस शुड बी द रिजल्ट। नहीं तो अच्छा इस बार हाँ बोलिए, लास्ट बार ना बोलते, हर बार ना बोलना अच्छा नहीं लगता, इस बार हाँ। Go through it, please. The two vectors A and B are now in the same sense. यहाँ पर they were not in the same sense. Triangle और लगा ही नहीं सकते यहाँ पर, ट्रायंगल और लगा ही नहीं सकते इधर पे। कोई भी ट्रायंगल बनाने से थोड़ी होगा ट्रायंगल हो। The two vectors that you are adding must be in the same sense. And then the resultant is the third side in the opposite sense. Go through it. सर इसके आंसर में शिफ्ट इंडिपेंडेंस लिख के ये दिखा दिया, फिर लिख दूंगी नोट कर। आंसर चार ऑप्शन होता है भाई, चार ऑप्शन, ए बी सी डी, ए या बी या सी या डी। चाहे तुक्का से मार्क करो, चाहे चीटिंग करके मार्क करो, चाहे सोच के मार्क करो या कैलकुलेट, सही आंसर। आर यू क्लियर विद दिस? यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा बी में क्या खासियत है कि बी को शिफ्ट किया और ए को शिफ्ट किया? एकदम कर सकते हैं, करते हैं। बी को वैसा ही रखो जहां था, और ए जो यहाँ पे था उसको कैसा क्या करते हैं? शिफ्ट कर दे। किस तरह शिफ्ट करना होगा इसको? पैरेलल टू इटसेल्फ करना अलाउड है क्या? एकदम अलाउड है, फ्री वेक्टर्स है। तो दिस वुड बी द वेक्टर ए, दिस वुड बी द वेक्टर बी, यस और नो? And now are they in the same sense? Which sense is this? Clockwise sense. Now the two vectors are joined in the same sense in this manner, B and A. And the resultant will be represented by what? The third side of the triangle. In which sense? In the opposite sense. ये दोनों वेक्टर clockwise sense में थे, तो तीसरा वाले को anti clockwise sense में बनाना होगा। Correct एकदम, very good. This is also equally correct. Do you understand this? B को शिफ्ट करो A का सर पे, या A को शिफ्ट करो B का सर पे, एक ही बात है। B का सर पे तो शिफ्ट किया, या तो B को शिफ्ट करे या फिर A को शिफ्ट करे। रूल क्या है? They must be joined in the same sense. किसको शिफ्ट करना है तो रूल में था ही नहीं, किसी को भी शिफ्ट करना। इससे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आता है, कोई बता सकता है तो बताओ। ये एनालिसिस जो अभी करे कि बी को शिफ्ट करे या ए को शिफ्ट करे, रिजल्टेंट सेम ही आ रहा है। प्लीज रियलाइज द ब्लू एरो दैट आई गेट is almost the same thing, right? It's the same thing, same length, same direction. The resultant arrow that I am getting is the same. फोर्स वेक्टर तो हम अभी गए नहीं और जाएंगे भी नहीं अभी तो फ्री वेक्टर समझ रहे। फ्री वेक्टर्स का क्या रूल समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ, शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। ये हटा दो सर बोलो। ये इस वाले में इसमें बी को शिफ्ट किए थे, इसमें बी को शिफ्ट किए थे, उसमें एरो जा रहा है ए टू बी, इसमें एरो जा रहा है ए टू बी, ठीक है। और उसमें बी टू वापस तुम ये पॉइंट को ओवर हो तो अब तुम पहले डिस्प्लेसमेंट ए किए, तुम इस पॉइंट ए पर आ गए। अब तुम डिस्प्लेसमेंट बी किए, तुम पॉइंट बी पर आ गए। तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओपी, वही हो गया। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलो मेरे को इस रास्ते से नहीं जाना, ये रास्ता बकवास है, मेरे को दूसरा रास्ता जाना। क्या करोगे? ओ से स्टार्ट करके पहले बी डिस्प्लेसमेंट करेंगे,
ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए, कोई दूसरा पॉइंट पे पहुंच गए, वहां पे रुकेंगे नहीं, फिर आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ए करेंगे, कहाँ पहुंच गए, सेमी पॉइंट पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है क्या रूल है ये, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। जो सुना सुना बात है वो पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल देगा तो ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम देगा पैरेललोग्राम लो, क्या गलत बोला, स्कूल में भी हम लोग को पढ़ाया। This is this says that the order of addition is not important. मैं ओ से स्टार्ट करके पहले बी किया फिर ए किया, या पहले ए किया फिर बी किया, बात तो एक ही हुआ, मैं वही कॉन्सेप्ट की बात, my resultant is the same, I get the same resultant। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, कंप्यूटर जो पढ़ा है, commutative, the order of addition is not important, the order in which we add the two displacements is not important, order of addition is not important। ओ से स्टार्ट करके पहले बी डिस्प्लेसमेंट किए या ए, बी या उसके बाद ए, या फिर पहले ए उसके बाद, the order in which we add the two vectors is not important। Okay, so I can say that vector addition obeys which law? Yes, obeys commutative law। क्या होता है commutative law? Order of addition is not important, independent of the order of addition। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले ए या ए करना होगा फिर बी करना, पहले बी भी कर सकते, independent of order of addition। ठीक है, ए पहले बी बाद में, इज सेम एज व्हाट, बी पहले ए बाद। समझ में आ रहा है, कि मैं इस हिसाब से चालू करूंगे, इस तरह से वापस फिर मेरे को समझ में आया कि अंग्रेजी ठीक ठाक करने होता नहीं है, तो हिंदी लिखो, बट हिंदी ये अगर अल्फाबेट यूज करेंगे तभी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो भी नहीं आता है, अपन को हिंदी आता है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश दैट द प्रॉब्लम, वी डोंट नो, वी आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, अपन को हिंदी आता है बट हिंदी अल्फाबेट से वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग, तो इंग्लिश आता है हिंदी अल्फाबेट। मैथ्स में निकाला भैया वो
समझ में आया ट्रायंगल लॉ थोड़ा बहुत ये है कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन पहले एडिशन तो समझ लिया सब्ट्रैक्शन भी करेंगे क्यों नहीं चिंता करो मल्टीप्लिकेशन सब करेंगे पहले एडिशन तो करेंगे यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सपोज इफ दिस इज वेक्टर ए डोंट टॉक and this is vector b what will be the resultant resultant ड्रॉ करके बताओ ऐसे ऐसे मत करो ड्रॉ नोटबुक दिया भगवान पेन दिया हाथ दिया लिख के बताओ the two vectors a and b you to find the resultant you can use triangle law of vector addition what is the triangle law पहले कौन सा वेक्टर बनाए सर जो इच्छा करो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है कौन सा पहले बनाए उससे कोई मतलब नहीं ठीक है बहुत बढ़िया बात है पहले अपन ए बना लिए ओ से जर्नी स्टार्ट किए पहले ए बना लिए अब वेक्टर बी कहां बनाए इतना डिस्प्लेसमेंट तो कर लिए वापस से बी यहां थोड़ी बनाएंगे इसको we will draw it here do you understand this ऑलरेडी मैं ओ से तो ए इस पॉइंट ए पर आ चुका हूं राइट अब जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट करूंगा वो ए स्टार्टिंग पॉइंट है उसका कैपिटल ए स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ठीक है ना और मैं किधर पहुंच गया पी पर तो व्हाट इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट ओ टू पी तो इसको लिखने का और एक तरीका है उसको बोल दिया हेड टेल टेक्निक एचटीटी सर और पूछ टेक्निक हेड टेल टेक्निक क्या है हेड टेल टेक्निक if the head of the first vector is joined to the tail of the second this is head of the first and this is the tail of the second if the head of the first vector look please if the head of the first is joined to the tail of the second joined to tail of the second then the resultant कैसे बनाएंगे tail of the first will be the tail of the resultant and the head of the second will be the head of the result. Okay, if the head of the first is joined to the tail of the second, then the tail of the first is the tail of the resultant, and the head of the second, this is the tail of the first. Tail of the first is the tail of the resultant, and the head of the second is the head of the resultant. Go through it, please. नहीं समझ में आता एक बार में कुछ समझ नहीं आता सर दो पांच बार बोलिए तो समझ में आएगा सर बीच को नीचे की तरफ ही बनना है एकदम
नीचे बोलो सर ना बी का डायरेक्शन उल्टा थोड़ी लगता है नॉट वेस्ट समझ आ रहा है बच्चों head if the head of the first is joined to the tail of the second then the resultant can be found in this way या फिर the resultant can be represented by joining the tail of the first to the head of the second resultant कैसे बनाए tail of the first को किसके साथ जोड़े head of the second resultant is found by joining the tail of the first to what head of the second tail of the first is the same as tail of the resultant and head of the second is same as the head of the resultant go through it. A के टेल को B के हेड के साथ में कर सकते हैं क्या कर सकते तो नहीं कर सकते ये B है ये A है कम्युनिटी लॉ तो है हेड ऑफ द फर्स्ट इज जॉइंट इस बार B पहला वेक्टर है और ये यूज कर सकते हैं कौन पहला कौन दूसरा उससे तो फर्क नहीं पड़ता दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी लॉ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सर आप ए और बी दोनों को शिफ्ट किया मैं दोनों को शिफ्ट करूं क्या प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम फाइनल जो ब्लू एरो है वो तो सेम आ रहा है ना हर डायग्राम वही चीज कैन मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन करें बहुत देर हो गया टाइम पास करते हुए क्वेश्चन सपोज देयर इज अ वेक्टर A which is 4 meter displacement and there is a vector B which is 3 meter displacement you have to find vector R find the magnitude of vector R क्वेश्चन समझ में आया एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 दूसरा वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट दैट इज द क्वेश्चन तो डायरेक्शन तो बताओ इन दोनों वेक्टर का तो अगर दो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो रिजल्टेंट का यूनिक आंसर नहीं निकाल सकते तो स्केलर का वैल्यू पता होता है तब मैं सम निकाल सकता हूं बट दो वेक्टर्स है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन नहीं दिया है तो कहां से निकालेंगे रिजल्टेंट नहीं समझ तो कैसे अज्यूम कर लिए कि सर 90 डिग्री होगा दोनों ए और बी के बीच में आप पाइथागोरस पता है तुमको वो आई नो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बट मैं थोड़ी बोला हूं कि ए और बी के बीच में 90 कैसे अज्यूम कर लिए तो रूल क्या है if the direction of the vectors are not known then we cannot find a unique answer for the result देखो पहला क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों समझ आ रहा है यस आर यू क्लियर विद दिस सॉर्ट ऑफ काफी अनकन्विंसिंग सा है आई फोर्स यस ठीक है हां बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट निकालना क्या है पहला दो वेक्टर है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है ठीक है तो रिजल्टेंट का यूनिक आंसर नहीं निकाल सकते लिख लो प्लीज if only the magnitudes of the two vectors are known if only the magnitudes of the two vectors are known या फिर the direction of the vectors are not known जैसा लिखी की बात है if only the magnitudes of the two vectors are known or I can say if the directions of the two vectors are not known we cannot find the unique answer for the result we cannot find a unique answer for the result we cannot find a unique answer for the result but कुछ तो बता पाएंगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा तो कुछ ही आंसर बता पाएंगे पूरा इंफॉर्मेशन दिया होगा तो पूरा आंसर बता पाएंगे यहाँ पर हाफ इंफॉर्मेशन दिया होगा तो कुछ तो बता पाएंगे क्या बता पाएंगे Are you clear with my question first? जो दो वेक्टर ऐड करना था उसका डायरेक्शन के बारे में कोई अता पता नहीं है तो क्या रिजल्टेंट निकाल पाएंगे एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे बट थोड़ा बहुत तो पता है वेक्टर्स के बारे में तो रिजल्टेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत तो बता पाएंगे क्या बता पाएंगे yes I can define the range in which the resultant would lie
I can define the range in which the resultant का magnitude would lie. ठीक है, क्या होगा वो 1 to 7, 1 to 7, 1, ये भी समझने की कोशिश करो। ध्यान दो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। मैं वेक्टर ए ऐसा अज्यूम कर लिया, 4 मीटर वाला वेक्टर ऐसा अज्यूम कर लिया। वेक्टर बी कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वेक्टर बी का मैं पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं। आई एम जस्ट ड्राइंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ वेक्टर बी। आई एम जस्ट ड्राइंग द पॉसिबल वेक्टर बी। ये कोई भी हो सकता है ना वेक्टर बी, बिकॉज डायरेक्शन नहीं दिया हुआ वेक्टर बी का। वेक्टर बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो वेक्टर बी बाएं तरफ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता था जिसमें आंसर 3 5 आता। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ ऐसा भी हो सकता है। So what can I say about the what is this circle? What is the semicircle? Basically, it is the locus of the head of it. It is the locus of head of it. वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी का मेरे को डायरेक्शन नहीं पता ठीक ठीक, बट क्या पता है मेरे को? मैग्नीट्यूड पता है। तो मैं एक 3 मैग्नीट्यूड का सर्कल बना लिया, एक 3 मैग्नीट्यूड का 3 रेडियस 3 मीटर्स का एक सर्कल बना लिया। कौन सा सेंटर है उस सर्कल का? हेड ऑफ। तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है? अगर ये भी होता तो रिजल्टेंट ये हो जाता, अगर ये भी होता तो रिजल्टेंट ये हो जाता, अगर ये भी होता तो रिजल्टेंट इसको बना देते, अगर ये भी होता तो रिजल्टेंट ये हो जाता। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? दिस वुड बी द रिजल्टेंट। अगर ये भी होता तो दिस वुड बी द रिजल्टेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? इस डायग्राम को थोड़ा सा just for the sake of clarity less number of cases में ड्रॉ कर रहा हूं। और अगर ये भी होता तो रिजल्टेंट क्या होता? ये वेक्टर भी होता तो रिजल्टेंट 0 हो जाता, ये हो जाता रिजल्टेंट। देखो समझ में आ रहा है या नहीं? वेक्टर ए यही है। अब बी को चेंज करते जाएंगे अगर, तो क्या चेंज होता जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? All of them are triangle laws. All of them are triangle laws. Please realize this. Vector B can be this one. 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 Based on the different possibilities and many other possibilities. तो 5 ही बनाया, infinite possibilities. Based on what is vector B, the resultant will change in what and what? Magnitude B and direction B. This is the resultant in the first case. This would be the resultant in the second case. This would be the resultant in the third case. This is the resultant in the fourth case. Resultant in the fifth case. तो बात है, कुछ नहीं समझ में। A plus B पर मैं पॉइंट O से स्टार्ट किया, पहले पॉइंट A पे पहुंचा, अब मैं पॉइंट B पे पहुंचा। B हाँ सेम लाइन में हो सकता है। डायरेक्शन के बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं हूँ। A can be 4 meter east, B can also be 3 meter east. Then it would be 7 meter. We'll talk about. Good observation. We'll talk about. ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये वेक्टर A होता 4 मीटर ईस्ट और ये वेक्टर B होता 3 मीटर नॉर्थ, then the resultant would be 5 meters in magnitude. Resultant का magnitude क्या हो जाता? 5 meters. Can the resultant be more than 5 meters? Yes, sir. क्या करते हैं बी को थोड़ा सा घुमा देते अगर, ये अगर वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता तो रिजल्टेंट वुड हैव बिकम मोर देन 5, 6 हो सकता था क्या? हाँ हो सकता था। बी को थोड़ा सा लेफ्ट अगर घुमा दे तो क्या हो जाता? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, रिजल्टेंट 4 हो सकता था क्या? कब होता 4?
और कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? चार और चार आइसोसेलेस, सुनो आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट एंगल है ना। और क्या करें अभी? बी को और इधर घुमा सकते थे क्या? घुमा सकते, आपका इच्छा, डायरेक्शन तो दिया नहीं है, इधर आपको बी को रखना है। तो ए ऐसा कर सकते थे और बी ऐसा कर सकते थे कि मैं पहले 4 मीटर आगे गया तो 3 मीटर पीछे आ गया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया मेरा? ध्यान दो ध्यान दो, क्या हो गया? कुछ नहीं है पढ़ने का। हाँ रुको रुको रुको, थोड़ी देर ध्यान, नीचे नीचे क्या देख रहे हो? अच्छा फोन ही नहीं है, तो नींद आ रहा है। अरे नहीं, पीछे पीछे हो, सोल्जर को ध्यान देना है, सोल्जर जैसे पढ़ लिया लंबा चौड़ा, कोई वो गुस्सा मार दे वो उठे। हाँ और क्या खत्म है, ध्यान ध्यान देना। अच्छा जी हाँ, जी हाँ, अच्छा ओके ओके, हाँ ये बात तो बकवास बात करिए, हम लोग ये सब भी समझ में आता है क्या है, ये सब वेक्टर डायरेक्शन ये सब क्या रखा है, ये सब बकवास करिए, हम लोग ये सब खूब समझ नहीं समझेंगे तो पार्टिसिपेट भी करेंगे। ये समझ में आता है। 4 मीटर दाहिने गए और 3 मीटर बाएं आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर हुआ। दैट्स द रिजल्ट, ये रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू है। ओके, एंड अगर मैं बी को और थोड़ा सा राइट घुमाते गया और एकदम ईस्ट टुवर्ड्स ही ले गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 मीटर राइट एंड देन 3 मीटर राइट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया? 7 मीटर राइट। फुल लेफ्ट हैंड। Okay, so if the magnitudes are given and the directions are not, then can I find out a unique answer for the resultant? No. But what can I find? I can find the range in which the resultant would be. I can find the minimum value of the resultant and the maximum value of the resultant. कि उसके बीच में कहीं पे होगा, क्या होगा नहीं पता। ठीक है, ये जो सर्कल बनाया ये क्या बनाया मैं? लोकस ऑफ हेड ऑफ बी। क्या है लोकस ऑफ हेड ऑफ बी? It is a circle of what radius? Circle of radius equal to mod b and center equal to head of it. A का सर है। ठीक है, B can be anywhere on that circle, B can be any line on that circle, and based on that the resultant can have different values. So please write this point down. If only the magnitudes of the vectors are known, if only the magnitudes of the vectors are known, we can find what? We can find the range in which the resultant would lie. Range in which the resultant would lie. All of them are triangle law of vector addition. Yes, all of them are triangle law of vector addition. I get Rmin and Rmax. क्या है Rmin and Rmax? 1,7 mod R का value belongs to 1 meter, 7 meters. Close brackets. Close bracket मतलब क्या? Both the values are included. Close मतलब both the values are included. 1 meter भी possible है और 7 meter भी possible है. This is triangle law. This is also triangle law. Minimum और maximum value के लिए extreme version of triangle law लगाना होगा. Extreme version of triangle law क्यों बोल रहा हूँ मैं? What is special about this? It is मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से ये कैसे लेके आया? ध्यान दो everyone. पीछे ध्यान दो. यहाँ से ये कैसे लेके आया मैं? B को दबाते जा रहा हूँ. As I keep rotating B, the area of the triangle gets compressed, and finally it becomes the triangle of what area? Zero area. This is like a triangle of zero area. इसको भी मैं अगर राइट लेके जाते जा रहा हूँ, तो I'm compressing the triangle. As I compress the triangle, I'll get this triangle.
तो हाउ विल यू फाइंड आउट द एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे निकालेंगे? बाय द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द ट्राइंगल। Why am I calling them as extreme versions of triangle log? Because they are triangles of what area? Zero area. Okay, यहाँ पर the area of the triangle is zero. The area of the triangle is zero. ट्राइंगल का क्या रूल होता है? अगर ये कोई भी ट्राइंगल है, चाहे जैसा भी ट्राइंगल एबीसी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये सुने हो? हाँ। यहाँ पर क्या हो गया? ये एक्सट्रीम केस है, ये 1 मीटर का एरो है, ये 3 मीटर का है, और ये कितना है? 4 का। यहाँ पर ये 4 का है, ये कितना का है? 3 का है, ये कितना का है? 7। व्हाट वी गेट? These are या a plus b equal to c। एक्सट्रीम केस क्यों बोल रहा हूं मैं ये ट्राइंगल लॉ का? क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो इन अ वे it is given out, right? The triangle is dead। मैं उसको कंप्रेस करके पूरा चपटा कर दिया, राइट? एरिया क्या हो गया इस ट्राइंगल का? 0 हो गया। और तीनों लाइंस अब स्ट्रेट लाइंस होते हैं। They are lying, all the three sides are now on the same straight line, and so a plus b is equal to c। In extreme cases, a plus b will be equal to c। a plus b is equal to c। This is the extreme version। All the sides are what? All sides are lying on the same line। इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द ट्राइंगल। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो क्या है वो अभी पता नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए बोथ वेक्टर्स को प्लस माइनस नो। आर यू क्लियर विद दिस? अगर दो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, अगर दो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्या निकाल पाएंगे? एक्सट्रीम वैल्यू, रेंज निकाल पाएंगे। और वो रेंज क्या होगा? रेंज का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? विल बी a प्लस b। और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? a डिफरेंस b। a डिफरेंस b। ऐसा मत सोचना कि मेरा हाथ काट दिया लिखते हुए, इसलिए वो माइनस को ऐसा लिख दिया, ठीक है? दिस इज नॉट एज डिफरेंस सिंबल। It is not a subtraction symbol, it is a difference symbol। What do you mean by difference symbol? देखो समझ में आया या नहीं स्टोरी? ए डिफरेंस बी मतलब क्या? अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी, अगर बी ए से बड़ा है तो बी माइनस। Yes। ठीक है, we call it as difference, not subtraction। A difference B, कुछ नहीं स्टाइल मारने का तरीका। Go through it। See if you are able to understand this। If two vectors are only known in their magnitude, the resultant can only be known in the range of magnitude। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का क्या बता पाएंगे? रेंज बता पाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सर्कल? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है 3 मीटर, तो 3 मीटर का एक सर्कल बना लीजिए, 3 मीटर रेडियस का। अब वेक्टर बी किधर भी हो सकता है इस सर्कल में, ऐसा 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 ऐसा, इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल। नीचे में भी ऑफकोर्स, नीचे में पॉसिबल है। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है 4 मीटर ईस्ट और वेक्टर बी दिया हुआ है 3 मीटर नॉर्थ। यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। हाँ सर, ये बात आप ठीक बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड भी आप दे दिए, डायरेक्शन भी दे दी। ये आप
इज्जतदार तरीके से क्वेश्चन दियो, यहाँ पर ऐसे नॉनसेंस कर रहे थे, मैग्नीट्यूड दे दिए, डायरेक्शन नहीं दिए. Now you have given the magnitude and the direction. I'll be able to find out the resultant. तो resultant निकालना है, a plus b का वैल्यू, वेक्टर r निकालना है, वेक्टर r पूछा हूँ, तो I'm asking you what the magnitude as well as the direction, दोनों चीज में मांग रहा हूँ. And I am also asking you what is vector s. तो आंसर बताओ, दो आंसर पूछा हूँ, बोलो. सॉल्व करने बोले तो लिख नहीं पा रहे हैं, से पढ़ा रहे हैं. आंसर 5 होगा, 5 तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन क्यों देना होगा? एक ईस्ट की तरफ है, एक नॉर्थ की तरफ है, डिफरेंस में खाली मैग्नीट्यूड को घटाने से कैसे चलेगा? रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड ऐड तो कैसे? आधा होगा आंसर है, आधा नहीं है तो गलत आंसर है. क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना लेस हो गया? अभी सर एक माइनस का एग्जांपल नहीं था तो पता है
समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 4 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी क्या दिया हुआ है 3 मीटर नॉर्थ। तो बनाते हैं, दिस इज द ईस्ट एंड द नॉर्थ डायरेक्शन। द फर्स्ट वेक्टर इज 4 मीटर ईस्ट, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। ओरिजिन से स्टार्ट किए, पॉइंट ए पे पहुंच गए 4 मीटर ईस्ट। नाउ द नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम ए और फ्रॉम ओ, फ्रॉम ए तक तो पहुंच गए, तो ए से अब क्या बनाए 3 मीटर नॉर्थ। दिस वेक्टर बी 3 मीटर नॉर्थ, कहां पहुंच गए पॉइंट बी पे, द फाइनल पॉइंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ओ टू बी। Every time you try to add two vectors, there will be a triangle. Okay, the resultant will be the third side of the triangle in the opposite sense. The resultant will be the third side of the triangle in the opposite sense, and so the Pythagoras theorem ये opposite sense से समझ में आ रहा है? Vector r clockwise sense में और a और b कौन सा sense में था? Anti clockwise sense में था। See, we are clear with this. This is the vector a, this is the vector b, and this is the resultant. Go through it. Yes or no? तो वेक्टर r क्या है, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस से 5 मीटर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं होगा, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये एंगल थीटा अगर अज्यूम करते हैं तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। पता है सब पीपल हैव कल इट डाउन, तो 3/4, तो थीटा कितना आया 37। tan थीटा 3/4 मतलब थीटा 37 होते हैं, पता है ये इतना लिस्ट। तो व्हाट कैन आई से, वेक्टर r is what 5 meters 37 degrees what नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट को रेफरेंस अगर अज्यूम करें तो नॉर्थ की तरफ मूव करना होगा 37 डिग्री, तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
तो सर मेरे को ईस्ट अच्छा नहीं लगता, नॉर्थ अच्छा लगता है। तो नॉर्थ अगर अच्छा लगता है तो नॉर्थ से कितना मूव करना होगा? 53, क्योंकि जुड़ गए, इट शुड बी 90, so I can also write it as 5 meters 53 degree east of north 80. Go through it. Go through it. देखो ये समझ में आया या नहीं? अब सब्ट्रैक्शन कर, सर ऐड तो कर लिया, पर अब सब्ट्रैक्शन कैसे करें? Subtraction of the two vectors a minus b. All problems on subtraction we will write it in this way. हर सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को एडिशन का प्रॉब्लम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि अपन को एडिशन आता है, तो इसको कैसा कर लेंगे? a प्लस b। देखो तो हमने आया, c क्या है? माइनस ऑफ, माइनस मतलब उल्टा डायरेक्शन। c is negative of b. Do you understand this? c is negative of b. What do you mean by negative of a vector? Opposite direction. Same magnitude, opposite direction. Negative of a vector. Negative of a vector मतलब क्या? Same magnitude and opposite direction. ठीक है? So I can say that this is the vector A as before. Vector C will be this one. ये वेक्टर A है 4 मीटर ईस्ट। वेक्टर B क्या है? वेक्टर C क्या है? माइनस B। B क्या था? 3 मीटर्स नॉर्थ था, मतलब ये क्या हो गया? 3 मीटर साउथ। समझ आ रहा है? तो अब A और C को ऐड करना है। ऐड करना हमें आता है। द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट साइड्स दिस द वेक्टर है। समझ आ रहा है? ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 ही है। ठीक है? tan थीटा यहाँ पर भी 3/4 ही आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा इज 37 डिग्री। तो सब्ट्रैक्शन का क्या आंसर आ रहा है? 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट से कहां घूम रहे हैं? साउथ की तरफ। साउथ ईस्ट को रेफरेंस अज्यूम करके साउथ की तरफ अगर रोटेट करें 37, तब फिर डिजायर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट। तो क्या समझ में आ रहा है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी 5 आएगा और सब्ट्रैक्शन भी 5 आएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। So please remember this, sum of two vectors can give you a value which is less than the two vectors. Sum and the difference का value दोनों same आया, तो it is not the conventional addition that you know. A plus b भी 5 आया, A minus b भी 5 आया। क्यों? Directions involved है, इसलिए सिर्फ नंबर थोड़ी घटा रहे। 4 माइनस 3 थोड़ी करेंगे, एक हो जाएगा, या 4 प्लस 3 थोड़ी करेंगे, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 3 क्या आ रहा है? 5, और 4 माइनस 3 क्या आ रहा है? 5। प्लीज रियलाइज दिस, वी आर नॉट एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्केलर्स, इट इज वेक्टर एडिशन। डायरेक्शंस आर इन्वॉल्वड। हर बार क्या यूज करना होगा? ट्रायंगल। गो थ्रू। Can you tell me what is b minus a? Same होगा, same। वेक्टर बी कौन सा है? वेक्टर बी इज 3 मीटर नॉर्थ, तो पहले बी बना ले। और ए क्या है? माइनस ए इज 4 मीटर ईस्ट, तो माइनस ए क्या होगा? 4 मीटर वेस्ट। देखो समझ में आ रहा है या नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए, which can be written as b plus d. वेक्टर b क्या है? 3 मीटर नॉर्थ। वेक्टर d क्या है? बोलो। वेक्टर d क्या है? 4 मीटर वेस्ट। यस। क्यों वेस्ट? ए क्या था?
4 meter east था, तो D is minus of A, which means minus of 4 meter east. तो माइनस को क्या करें, माइनस विल फ्लिप द डायरेक्शन. नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन बस पलटी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. तो 4 मीटर ईस्ट का माइनस विल मीन 4 मीटर वेस्ट. तो रिजल्टेंट क्या होगा, 5. ये भी 5 मीटर से 5 meters what angle, your angle would be 37 degrees. नहीं समझ में, ये एंगल थीटा अगर देखते तो tan थीटा 3/4 ही तो है, तो ये थीटा जो है थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल. तो क्या लिखेंगे एस डैश को, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 5 meters 37 degrees नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट. नहीं समझ, आई वुड से इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं था. क्यों, नेगेटिव साइड, किस पे, एस डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ, एस डैश था बी माइनस ए, उसको क्या लिख सकते थे, माइनस ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी तो निकाल के रखे अपन, तो एस डैश सिंपली क्या हो जाता, माइनस ऑफ एस. एस क्या है ये, एस डैश क्या हो जाता उसका उल्टा. कोई तो है तो दिमाग खराब हो जाता है. वापस से सुन लो, एस डैश में पूछ रहा हूँ, एस डैश क्या है, बी माइनस, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. ए माइनस बी की जगह अब बी माइनस ए कर, तो दोनों बराबर नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम थोड़ी आया, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है. पूछा था ना सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज एंटी कम्यूटेटिव, उसमें नहीं जाते, इट इज नॉट ओबे कम्यूटेटिव. गो थ्रू इट. एच डैश क्या है, बी माइनस ए. कैसे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन. हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एडिशन. हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू एडिशन ऑफ वेक्टर, by taking the negative sign with the second. What do you mean by negative sign with the vector, same magnitude ulta direction. Take note please, all problems on subtraction, all problems on subtraction, all problems on subtraction of vectors are done in what way, all problems on subtraction of vectors are done by converting it into addition, are done by converting it into addition of vectors. कैसे convert कर लेते हैं अपने, by absorbing the negative sign with the second term. All problems on subtraction of vectors are performed by converting it into addition of vectors. How do we full stop? How do we do that? By converting, by absorbing the negative sign with the second term. By absorbing the negative sign with the second term. कैसे absorb करते हैं negative sign? By flipping the direction. Flipping, एकदम flip हो रहा है. By absorbing the negative sign with the second term. So stop, the negative sign reverses the direction. The negative sign reverses the direction. Magnitude बदलता है क्या negative sign? नहीं, सिर्फ direction particular. Go through it. Please go through it. See if this makes sense. तो b माइनस ए करना था, मैं उसको माइनस ए को कुछ नया नाम दे दिया d. तो d क्या है, माइनस ए है, माइनस ए मतलब 4 मीटर वेस्ट. अब d b प्लस d कर दी. और दूसरा तरीका में क्या बोला, सिंपल अलजेब्रा करे बस, चालू हो गया सामान. नहीं ऐसे ही होता है, इसका मैथमेटिक्स में है. दूसरा तरीका में क्या बोला, b माइनस ए करना है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हो तुम लोग. नॉर्मल अलजेब्रा ही है, वेक्टर अलजेब्रा का रूल्स काफी सिमिलर ही है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एटसेट्रा, राइट, काफी सिमिलर है. b माइनस ए को करना है तो माइनस बाहर ले ली तो a माइनस बी हो गया, a माइनस बी ऑलरेडी हैव सॉल्व.
What was A minus B? 5 meters, 37 degrees south of. So A dash will be what? 5 meters, 37 degrees north or west. साउथ की जगह नॉर्थ आ गया, ईस्ट की जगह वेस्ट तो आ गया, एकदम उल्टा है। 5 meters 37 degrees नॉर्थ और वेस्ट। साउथ की जगह नॉर्थ आ गया, ईस्ट की जगह वेस्ट आ गया, क्योंकि माइनस साइन है। गो थ्रू समझ आ रहा है? That's how we add vectors, that's how we subtract it. Please go through it. Go to this one. If I give you some time, please go through it. If you have doubts, please ask. Please go through doubts and put go through it. Please keep paying no more. ट्रायंगल बना के रिजल्ट बनाओ। समझ आ रहा है? Also, please, if you have doubt, please ask. Can you move forward? IS स्पोर्ट्स में 99.2 से बेटर भी है 99.2 लोएस्ट क्या है एनीवन who's gotten less than अरे वो भी जाना जरूरी है मतलब रेंज डिफाइन किया आर भी नाम मैक्स उस हिसाब से पढ़ा हुआ है इसका 65% में क्या है 65 है लेस मेरे नजर में तो दोनों सेम if you ask me रत्ती भर में नहीं फर्क पड़ता है कि 60 आए या 90 100 आए दोनों सेम रत्ती भर में नॉट कोई एक चार आना आठ आना भी अंतर नहीं एकदम सेम लोग उतना ही इज्जत है मेरे नजर में क्लास 10 का बोर्ड करते इट माइट बी अ बिग डील फॉर यू ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली इट विल बी देयर इन योर सीवी क्लास 10 का बोर्ड का रिजल्ट 12 का बोर्ड का रिजल्ट विल बी इन योर सीवी थ्रू आउट योर लाइफ जीरो वैल्यू कोई मतलब जिसका 60 आया उसको डिप्रेस रहने का कोई कारण नहीं है और जिसका 99 या 98 या 95 आया उसको बहुत खुश होकर उड़ने का कोई कारण ये समझ में तो आ रहा है कि क्या अवस्था है अपना पहला चैप्टर है करेंट चैप्टर है और इसके पहले दो टाइम पास पहला चैप्टर का पहला क्लास में अपने साउथ और नॉर्थ पूरा कंफ्यूजन
तो इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है। मैं वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट पहली बार आता है कि ये क्लास 10 का 65% है, ये क्लास 10 का 95 है और ये क्लास 11 ही बनाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जेई और नीट बनाता ही नहीं, मैं सिर्फ 11 बना। जेई और नीट देखे घबरा ही जाओ, राइट? ये दिस इज द ट्रांजिशन फॉर 10 to 11. Go through it and write the heading angle between vectors. Heading angle between another point before we go into angle between vectors. I hope you have realized. Suppose मैं mass अगर लिखता हूँ, mass of a body is 10 kg. A single number can uniquely define a scalar quantity. I repeat, a single number can uniquely define a scalar quantity. Right? If I write down distance is 10 meters. Okay, it is uniquely defined. But if I write down displacement is 10 meters, it is not uniquely defined. It is not clearly defined. So a vector quantity can never be defined uniquely by a single number. Scalars can be uniquely defined by a single number. You are point एक लिख लो, फिर angle between vectors का बात करें. Scalar quantities can be uniquely defined by a single number. Scalar quantities can be uniquely defined by a single number. Scalar quantities can be uniquely defined by a single number, but for vectors, what do we need? We need magnitude and direction, but for vectors, as we need magnitude and direction, suppose a displacement at 10 meters east. तो ईस्ट का इंफॉर्मेशन मेरे को देना पड़ा, ओके, एक ईस्ट का इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ा. अगर ईस्ट भी नहीं लिखना है तो मेरे को लिखना होता प्लस 10 मीटर्स. Okay, plus would mean that it is in the rightward direction. Minus अगर लिखते हैं तो it would mean that it is in the leftward direction. This displacement would be minus 10 meters. या तो 10 मीटर वेस्ट लिखूं मैं, या फिर minus 10 meters कम से कम, right? So please realize this. Yeah. Upward downward भी हो सकता है एकदम.
तो प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन है, इसलिए मेरे को क्या करना होगा, अगर दे दिया कि इट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो भी प्लस माइनस देना होगा, मैं ये बोलूंगा। अगर दे दिया कि द डिस्प्लेसमेंट इज 10 meters in the horizontal direction, is that information sufficient? No, I'll still have to give a sign. Okay, please remember, vectors can't be defined by a single number, can't be defined by a single number. क्या चाहिए? अगर 1D वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड साइन, ओके, वन नंबर एंड वन साइन, एक नंबर देना होगा और एक साइन कम से कम देना होगा कि +10 है या -10 है। 2D वेक्टर अगर है तो क्या, 2D वेक्टर का मतलब क्या, पहले तो ये समझो। अभी जो हमने किए थे कि ए वेक्टर ए इज 4 मीटर ईच and vector b is 3 meters north and the resultant is 5 meters 37 degree north of east, ये है। तो 2D ये r जो है ये 2D वेक्टर है। 2D वेक्टर क्यों? क्योंकि कुछ में ईस्ट में मूव करना हुआ यहाँ पहुंचने के लिए और कुछ नॉर्थ में मूव करना हुआ। तो 2D वेक्टर अगर है तो दो नंबर देने जरूरी है। अगर 1D वेक्टर है तो एक नंबर के साथ एक साइन भी अगर दे दूं तो चल जाएगा, +10 मीटर मतलब राइट, -10 मीटर मतलब लेफ्ट। अगर 2D वेक्टर है तो फिर साइन से नहीं चलेगा, दो नंबर चाहिए। क्या दो नंबर यूज किया मैं? एक 5 और एक 15 and the other is 37. I used two numbers. So for a 2D vector, how many numbers you need? You need two numbers. What two numbers? One for magnitude and the other for direction. Two numbers are needed. One for magnitude and the other for direction. और अगर 3D वेक्टर होंगे अगर हो तो फिर 3 नंबर चाहिए। क्या 3 नंबर वो मैंने डिस्कस। I'm not going into the regime of 3D vectors. They are more difficult to visualize and comprehend. We'll talk about it, but not now. I am again leaving a open so that you can visualize. You can think on yourself. 3D वेक्टर को डिफाइन करने के लिए 3 नंबर चाहिए। सिंगल नंबर से कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग। 3D वेक्टर है तो कितना नंबर चाहिए? 3। 2D वेक्टर है तो कितना नंबर चाहिए? 2। 1D वेक्टर है तो सिर्फ एक नंबर से नहीं चलेगा, एक नंबर के साथ एक साइन डालना होगा तब जाके सकता। सिंगल नंबर से कभी नहीं डिफाइन कर सकते एक वेक्टर को। ठीक है, 2D और 3D वेक्टर्स में साइन आता जाता नहीं है। 2D और 3D वेक्टर्स में साइन मैटर नहीं करता क्या? नहीं, साइन से नहीं डिफाइन करता है। I will need two numbers. Go through this. Clear है? Yeah. सर मल्टी वेक्टर और स्केलर में तो कोई डिफरेंस है, एक साइन डालना होगा। ठीक है, we'll talk about it. The point is कि एक सिंगल नंबर से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। या तो एक नंबर के साथ में एक डायरेक्शन डालो, 10 मीटर वेस्ट डालना होगा, तो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन इज अ मस्ट। जस्ट 10 मीटर इज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो 10 मीटर वुड बी सफिशिएंट, नहीं सफिशिएंट है। 10 मीटर के साथ ईस्ट बोलना होगा या +10 बोलना होगा, 10 मीटर वेस्ट बोलना होगा या -10 मीटर बोलना होगा। तो कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, देयर आर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ कैन यू जस्ट गिव वन नंबर एंड से दैट द इंफॉर्मेशन इज complete? There are, in a vector quantity, there are two pieces of information. What are the two pieces of information? Magnitude and direction. So I need two things. मैग्नीट्यूड के लिए एक नंबर देना होगा और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन नहीं भी होता तो साइन बताना होगा कम से। okay, there are two pieces of information, one of magnitude and the other for direction. इसलिए एक सिंगल नंबर से नहीं बोल सकते, नहीं डिस्क्राइब कर सकते। ठीक है, let's now talk about the angle between vectors. सपोज एक वेक्टर है a और एक दूसरा वेक्टर है b। Okay, what is the angle between between these two vectors?
60 या 120? ये दोनों ऐड होके 180 होता है, पता है? तो एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन. Yes. You have to understand. You have to understand how do we define angle between two vectors. ध्यान दो. If you are not interested, leave. No one is forcing you to be here. If you have come here, please listen, please focus. अगर अपना करियर बनाना है, you will have to focus, not just for 1 or 2 weeks or 1 or 2 months, 2 साल, 2 straight goddamn years. If you want to make a good career or engineering or medical. Okay, it will not come easily. अगर नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो मत आओ क्लास में उस दिन, फिर टाइम ही वेस्ट करे हो ना आप ऐसे वो करके yawning and just see uninterested and no one is forcing you. करियर कभी भी पेरेंट्स या टीचर्स के फोर्स करके नहीं बना सकते. It has to be self driven. You guys, you'll have to be self motivated, right? That self drivenness must be there. I cannot push you and I can drag you and make you clear your board exams. I cannot drag you and make you clear your interview. You will have to have that self drive. तब वो नहीं होगा. देखो कोई जो दूसरा स्टूडेंट out of 20 lakh people who take these exams, someone who has worked harder than you should get it. They deserve better than you. Why should you get it? So please understand the reality. Wake up. Okay? अगर लग रहा है कि सवेरे 8 बजे क्लास नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा और जल्दी उठो. अगर नींद वाला वो रहता है तो स्लीप अर्लियर द प्रीवियस नाइट. नहीं से पार्टी करना होता है फ्राइडे में, ये तो नहीं होगा. Right? You will have to change your routine and you'll have to adapt it. 6 घंटा बैठने का आदत चाहिए, फोकस चाहिए. जेई में बैठ ही नहीं पाओगे. जेई एडवांस एग्जाम 3 hours plus 2 का ब्रेक फिर 3 hours कहां से होगा? कोई भी एग्जाम है 3 hours at least. 2 घंटा 1 घंटा में अगर नींद आने लग जाती है तो वेट. And you cannot improve it overnight. प्रैक्टिस कर करके you'll have to improve. घर पे भी जब पढ़ने बैठो 3 घंटे पहले मत उठो. फोकस रहिए गाइस. ठीक है, बीच में जब ब्रेक मिलता है डू नॉट यूज फोन. व्हाई? बिकॉज़ इट जस्ट डाइवर्ट्स योर माइंड. जस्ट वो 2 मिनट का नुकसान नहीं हुआ कि तू अपन कर रहे थे कि 2 मिनट में फोन देखिए तो क्या है, सर तो अभी पढ़ा भी नहीं है. बट वो 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भरा और उसका अफेक्ट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वापस से 2 मिनट बाद में आके उसमें भी होगा. उस समय तुम उतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो रिलैक्स किए नहीं अपना माइंड को और अपना आइज को. तुम तो कोई दूसरा नॉनसेंस इंफॉर्मेशन में यूज कर लियो. So please realize these things, they have an effect. Every small bit has an effect. वो 2 मिनट क्यों मिलता है? ताकि जो मैं पढ़ाया उसको एक बार एक बार वापस से रिवाइज कर लो और फिर यू कैन रिलैक्स योर माइंड ताकि जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसको डाइजेस्ट करने में तुम्हारा एबिलिटी है. ओके, तो थोड़ा सा आई वुड वांट यू गाइस टू बिकम टू इवॉल्व. Not just be like the regular class 10, 11 students, right? Who have no aim in life. If you have figured out, if you have made an aim, move towards it, move in that direction. इसके लिए जो compromise करना है करो. Angle between two vectors का बात, ठीक है? Angle between two vectors क्या होता है? I cannot just draw any angle and say भाई ये है angle between two. Okay? You have a definite rule. नहीं तो confusion रहेगा ना, ये 60 है या 120 है क्या है? राइट? या फिर इधर अगर ज्वाइन कर दिए तो क्या है? तो द रूल लेट्स अंडरस्टैंड. अरे रुक जा, मेरे को बोल, हम पढ़ा दे तो सुन और समझ. ओके, सो द पॉइंट इज यू हैव टू फर्स्ट जॉइन द वेक्टर्स टेल टू और यू कैन जॉइन देम हेड टू हेड. ओके, एक रूल डिफाइन करना होगा ना ताकि मैं जो बोलूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोई यूएस में कोई स्टूडेंट है वो भी समझ पाए कि हाँ यही एंगल का बात है. Okay, so what is the rule? You have to join the vectors tail to tail or head to head. वो तुम्हारा एक शब्द जैसा tail to tail join कर लो या head to head join कर लो. Not head to tail, tail to tail या head to head.
and choose the smaller angle and choose the smaller angle. Choose the smaller angle. यहाँ पर smaller angle कौन सा है? तो 60 होगा क्या angle? क्यों? पहला step ही तो नहीं हुआ. Step 1 is to join them tail to tail. Step 2 is to choose the smaller angle. कोई भी दो वेक्टर के बीच में smaller angle थोड़ी चूज सकते. समझ आ रहा है? तो पहले क्या करें? कैसे shift independent property यूज करेंगे to join them tail to tail. I'll have to use the shift independent property. Use shift independent property. समझ आ रहा है? तो वेक्टर बी को किधर लेके आएंगे? यहाँ पे so that they are joining tail to tail. Now what are the two angles between the vectors A and B जिसमें से choose करना है smaller? Which are the two angles? 120 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? ये 120 क्यों है? कॉरेस्पॉन्डिंग. और दूसरा एंगल कितना है? 240 है. दो एंगल अभी 60 20 120 के बीच में चॉइस था ही नहीं कभी. आफ्टर यू जॉइन देम टेल टू टेल, दो एंगल जिसके बीच में चॉइस है वो 120 और 240 है. 60 एंड 120 के बीच में कभी चॉइस था ही नहीं. इट वाज जस्ट नॉट टू पर्पसली कंफ्यूज यू. ओके, क्योंकि यहाँ पर दे आर नॉट जॉइन टेल टू टेल. टेल टू टेल जॉइन करने के बाद में आई विल फाइंड आउट व्हाट आर द टू एंगल्स एंड देन आई विल चूज द स्मॉलर. गुड. नहीं समझ? Yes or no? Now can I join them head to head? Yes of course. Head to head भी join कर सकते थे and I could have chosen the smaller angle. वेक्टर A को ऊपर शिफ्ट कर. अगर मैं वेक्टर A को ऊपर शिफ्ट कर देता तो ऐसा बन जाता डायग्राम. ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है. क्या दो एंगल्स है? 120 and 240. Which one will I choose? The smaller one. 120. Go through it. Go through it. Fine. Now think and tell me. Suppose if you have two vectors. Five newtons and let us assume this is also 5 newtons. Assume this vector 5 newtons and assume this vector 5 newtons. And let's say this angle is 120 degrees. What's the angle between them? 60. You get the rule? Yes. You first have to join the vectors tail to tail. कोई भी एंगल देखने बस एंगल नहीं बोलना है. ओके, यहाँ पर ये एंगल 120 है, ये एंगल 60 है. कौन सा चूज करेंगे? दोनों ही नहीं. पहले शिफ्ट करेंगे. The first step is to join them tail to tail. इसको शिफ्ट करोगे लेफ्ट तो ऐसा डायग्राम बनेगा. सब डायग्राम बनाते जाओ वेक्टर्स में. डोंट थिंक क्या है जो डायग्राम है, क्या जरूरत है. ये डायग्राम से तो समझना पूरा चैप्टर का डायग्राम है. वेक्टर डायग्राम ये तो सीख रहे हैं अपन. So now they are joined tail to tail. The choice is between which two angles? इसको इधर लेके आए तो 60 होगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना. तो ये 60 है. दूसरा एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में? 300. Which one will you choose? The smaller one. हमेशा smaller one. Do you understand this? 60 degree एक एंगल है, दूसरा एंगल बड़ा वाला है 300 degrees. You have to choose the smaller one. So 60 degrees. The choice was never between 120 and 60. The choice is between 660 and 300. Go through. इससे और क्या चीज समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है इस एंगल वाला आइडिया? एंगल का आइडिया से और क्या समझ में आ रहा है बोलो? इंटीरियर एंगल स्मॉलर होगा. जैसे 60 300 हो रहा है, 60 तो लेगा मतलब इंटीरियर यहाँ पर 120 ये 120 इंटीरियर है. So I can say that the minimum angle between two vectors can be how much? And maximum angle between two vectors can be how much? 0 and 180.
360 का 180। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, इसके बीच में एंगल क्या है? The choice is between 0 and 360. Which one will you choose? The smaller angle, 0 degree. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180। इससे बड़ा अगर कर देंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी को और रोटेट किए तो क्या हो जाएगा? फिर ये थोड़ी लेंगे, फिर तो ये वाला बन जाएगा एंगल। 120 से बड़ा होते ही तो फिर दूसरा एंगल लेने लग जाएंगे। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है दो वेक्टर्स के बीच में? 180। Maximum angle between two vectors can be 180. The moment I try to increase it beyond 180, that will not remain angle between the two vectors. Why? I have to choose the smaller one. Minimum angle क्या होगा? Theta का minimum value is 0 degrees. Theta का maximum value is 180 degrees. When is the angle minimum? When the vectors are in the same direction, when the vectors are parallel to each other. Okay, when the vectors are in the same direction, parallel to each other, we call them as parallel vectors. And when is the angle maximum? When the vectors are in opposite direction. Parallel vectors मतलब क्या? Same direction. And what are these known as? This would be known as anti-parallel vectors. A and B are anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors. Go through it, please. They are anti-parallel vectors. Americans call it as anti-parallel. We are Indians, we call it as anti-parallel. Okay, anti-parallel vectors. What do you mean by anti-parallel vectors? Opposite directions. They are in opposite direction. Go through it. Go through it. Parallel vectors and anti-parallel vectors. Parallel vectors are in the same direction. Anti-parallel vectors are in the opposite direction. Resultant कब maximum होता है? Resultant of two vectors कब maximum होता है? Resultant कब maximum होता है? Parallel vectors में. Parallel vectors में maximum होता है. Parallel vectors में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री. तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा कि मैक्सिमम इस केस में? मैक्सिमम होगा. प्लीज रियलाइज दिस. इस डायग्राम को कैसा बनाओगे? तो इस डायग्राम को अपन कैसा बनाएंगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए कैसे जोड़ते हैं? टेल टू टेल जोड़ते हैं. किस केस में? टू फाइंड एंगल. टू फाइंड रिजल्टेंट हेड टू टेल जोड़ते हैं. हेड ऑफ फर्स्ट जॉइन टू टेल ऑफ सेकंड. Please remember the rules. To find angle, what is the rule? Join tail to tail. To find resultant, we join head of first to tail of second. समझो? To find resultant, we join head of first to tail of second. तभी तो ये आ रहा था 4 meters right and 3 meters right. Was giving me what? Maximum resultant 7 meters. What is the angle between the vectors A and B here? सोच के बताओ. A और B के बीच में क्या एंगल है? 0 degrees. Why? Because you have to join them tail to tail. इस डायग्राम में निकाल ही नहीं सकते एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. निकालोगे तो रॉन्ग आएगा. 180 लग रहा है ना इसमें तो 180 लग रहा है, व्हिच इज नॉट करेक्ट. व्हाई? बिकॉज़ आई हैव टू फर्स्ट जॉइन देम टेल टू टेल. ये तो रिजल्टेंट बनाने का डायग्राम है.
एंगल कैलकुलेट करने का डायग्राम कौन सा होता है जिसमें दोनों टेल जॉइंट होते हैं? So this is the diagram that will give you the angle. What is it? 0 degree. E vector A, E vector B. And what is the minimum? What was the minimum resultant? वेक्टर ए 4 मीटर ईस्ट है तो वेक्टर बी को क्या करना होगा मिनिमम रिजल्टेंट के लिए? 3 मीटर वेस्ट, 4 मीटर राइट, 3 मीटर लेफ्ट, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 1 मीटर। मिनिमम वैल्यू 1 मीटर हो गया। एंगल क्या है दोनों के बीच में? क्या बोलते हैं? ए और बी के बीच में 0 है, तो ए और बी के बीच में ये एंगल तो 0 है, तो टेल टू टेल जॉइंट करना। एंगल निकालने का तरीका है इसमें जॉइंट टेल टू टेल, एंड रिजल्टेंट निकालने का तरीका बाय ट्रायंगल लॉ इज टू जॉइन हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ सेकंड। इसमें एंगल अगर पूछा ए और बी में तो ये सब डायग्राम से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये डायग्राम में हेड और टेल जॉइन किया हुआ है बी और ए का। आई विल जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ द सेकंड, and now I will say that the angle is 180. Please go through it. Go through it, please. And try out the question. The two forces of 5 Newton each. The two forces of 5 Newton each, and the angle would be there is 120. Is 120. Find the result. And the second question is the two forces, 1 Newton and 5 newtons, yes, 1 Newton and 5 newtons. And the angle between them is 53 degrees. And the angle between them is 53 degrees. You have to find the magnitude of the resultant and the angle it makes with 1 Newton. It makes with 1 Newton. लास्ट 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करो और तुम आजाद हो। If someone can solve this, I'll feel कि भाई 2 घंटा 2.5 घंटा तो चलाया उसने। You understand? Question two forces of 5 Newton. Direction के बारे में तो मैं बस बोला हूँ, एंगल दोनों के बीच का 120। मैं ट्राई करूँ, 2 क्वेश्चन दिया हूँ, आंसर बताओ। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। Resultant, the two vectors are at an angle 120 degrees. Find out, find out. 2 वेक्टर्स है उसके बीच में एंगल 120 डिग्री है। 120 है।
राइट बनाना होगा। दो वेक्टर्स है उसके बीच का एंगल 120 है, रिजल्टेंट निकालना है। दो वेक्टर्स ऐसा बनाओ जिसके बीच में एंगल 120 है। पहले तो ये काम करो। 120 से 90 जैसे तुम लोग बनाते हो 120 से 120 थोड़ा टेढ़ा होगा। इसको शिफ्ट कर ऐसे 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 डायरेक्शन तो मैंने नहीं बताया बट एंगल बता दिया ना। लास्ट स्टेप जो किया वो गड़बड़ा गया। लास्ट स्टेप थोड़ा सा ये हटा दो क्या। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में अगर डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन गोली मारो अगर नहीं समझ में आया तो। पहले जस्ट सी इफ यू आर क्लियर विद दिस एस्पेक्ट। It is important to understand the difference between how do we calculate angle and how do we calculate resultant. Angle कैसे calculate करते हैं? पूछ ज्वाइन करके। और resultant triangle लॉ से कैसे calculate करते हैं? सर और पूछ ज्वाइन करके। हेड एंड टेल ज्वाइन करके रिजल्टेंट का डायग्राम बनाते हैं। एंगल के लिए टेल और टेल ज्वाइन करके बनाते हैं। कौन सा पहला वाला? कहाँ से बना? Five Newton 60 degree north of the star. The first force is 5 newtons. The second force is also 5 newtons. And this is how you draw 120. ये होगा ना 120। ये लोग ऐसा बोलो। ये कहाँ से 120? 95 लगा। ठीक है। इस डायग्राम से रिजल्टेंट बना पाएंगे क्या? ट्रायंगल लॉ नहीं बना। ये एंगल बनाने का डायग्राम। दोनों का पूछ ज्वाइन है ना। अब क्या करें? शिफ्ट करेंगे। ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। तो शिफ्ट करें तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऐसा बन जाएगा। ये इस डायग्राम से रिजल्टेंट निकल जाएगा क्या? इस डायग्राम से रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्यों? हेड ऑफ फर्स्ट इज जॉइंट विद टेल ऑफ द सेकंड। और ये डायग्राम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल कितना है? 60 120। ये 120 है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है और ये दोनों का लेंथ कितना है? ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इट इज अ व्हाट ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। दिस टू आर सेम एंड दिस कॉमन एंगल इज 60, so it will form a equilateral triangle. So the resultant will be what? 5 Newton in magnitude. What angle? 60 From north of north. हम ऐसा वेक्टर ले बोलो। नॉर्थ और ईस्ट का डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा ये सब चीज को। नॉर्थ और ईस्ट प्रॉब्लम दिया है तभी मेंशन करेंगे। फ्रॉम ए 60 डिग्री फ्रॉम ए रेफरेंस चाहिए। ईस्ट वहां पे रेफरेंस था, यहाँ पे ये रेफरेंस है मेरा। ए के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री, बी के रिस्पेक्ट में B के रिस्पेक्ट में 60 है। The angle between the vectors R and B is what? Why? They are joined head to head. Head to head करो तो भी एंगल निकलता है, tail to tail करो तो भी एंगल निकलता है। The resultant is 60 degrees, sorry 5 meters, 5 newtons, 60 degrees from A or 60 degrees from B. देखो स्टोरी समझ में आया या नहीं बच्चों? राग लगा दीजिए, कुछ नहीं समझ आएगा।
पहला क्लास में आप वाट लगे देखो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला लेंथ 5 न्यूटन ही होगा, ये दोनों 5 है तो ये भी 5 ही होगा। दूसरा केस में रूट 41 ये अजीब सा वैल्यू कैसे आ रहा है। पहला फोर्स दिया है 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का फोर्स बना लिया मैंने। दूसरा फोर्स दिया है 5 न्यूटन का, बड़ा एरो बना लिया। एंगल क्या है दोनों के बीच में, इस डायग्राम से रिजल्टेंट निकलेगा क्या, दोनों का पूंछ जुड़ा हुआ है। रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए पूंछ जोड़ते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए सर और हेड एंड टेल, राइट। एंड सो आई वुड शिफ्ट which vector 5 newtons. So now I have to find out the resultant. To find out the resultant, I'll do some restructuring. I'll shift it over here in this fashion. Yes. अब रिजल्टेंट निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री का इतना अस्तित्व क्यों है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों है इतना अस्तित्व, एनी ट्रायंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज two right expressed in terms of two right angle triangles. ध्यान दो प्लीज, 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, प्लीज पे अटेंशन। पहला फोर्स 1 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 5 न्यूटन है। रिजल्टेंट निकालना है मेरे को, इट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट साइड्स। बट इस थर्ड साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे, वाट लग जाएगी तो नहीं, वाट नहीं लगेगी, क्योंकि हमें क्या पता है कि हर ट्रायंगल को कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। Any triangle on the earth that you draw can be expressed in terms of two right angle triangles. Let's try it. I can think of these two right angle triangles. कौन सा दो right angle triangle? एक बड़ा right angle triangle और एक छोटा right angle triangle. समझ में आ रहा है, देख पा रहे हो दोनों right angle triangles? समझ में आ रहा है? या तो एनर्जी पूरा एकदम प्लस इंफिनिटी कर देगा माइनस सम रहना चाहिए, सम मतलब ना तो yes, I have expressed this triangle as two right angle triangle, the blue shaded triangle and the black shaded triangle. ये डायग्राम कैसे आया समझ में आ रहा है। ये दो इस वेक्टर को मैं शिफ्ट किया, अब 1 और 5 का रिजल्टेंट निकालना है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो 53 डिग्री ही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरे को जो रिजल्टेंट निकालना है वो किस दो चीज के बीच में निकालना है, ये 1 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, और ये एंगल कितना है, ये है 53 डिग्री। तो अब क्या कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके, ये लेंथ निकाल सकते हैं और ये लेंथ निकाल सकते हैं। मेरे को यही तो रिजल्टेंट चाहिए यार, इसका लेंथ चाहिए। तो पहले ये दो अगर निकाल लें, फिर ये बड़ा ब्लू वाला ट्रायंगल में सोचेंगे क्या है। तो इन दिस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल, in this small black right angle triangle, what is the length of the base? Why? ये 5 है तो cos theta can be written as what? Cos theta is base by the hypotenuse. थीटा क्या है यहाँ पे 53, तो बेस लेंथ कितना होगा निकल जाएगा। थीटा इज 53, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज का लेंथ 5, so what do I get base as 5 cos 53, क्या होता है cos 53 का वैल्यू 3/5, तो 3 न्यूटन। बेस का लेंथ क्या आ गया, 3 आ गया, न्यूटन गोली मानो 3 आ गया, और क्या 3 आ गया। परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे, sin theta is perpendicular by hypotenuse, this is 5, this is 53, तो perpendicular का लेंथ is 5 sin 53, 5 into 4/5 क्या आएगा 4, तो बेस का लेंथ 3 आ गया और ये परपेंडिकुलर का लेंथ 4 आ गया। अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, बड़ा ब्लू वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल जो ब्लू वाला है उसमें ये 4 है, 1 और 3 4 होता है पता है दोस्तों, और दूसरा वाला लेंथ थोड़ी 4, तो रिजल्टेंट कितना होगा 4 रूट 2।
क्या एंगल होगा ये? It's an isosceles right angle triangle. It's an isosceles right angle triangle. So it is 45 degrees from what? 45 degrees from the 1 Newton value. So the resultant in this case is 4 root 2 newtons, 45 degrees from the 1 Newton value. Magnitude of the direction. नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। पहले मैं रिजल्टेंट निकाला दो फोर्सेस जिसका मैग्नीट्यूड बराबर था और एंगल 120 था। शिफ्ट किया इसको, दोनों का मेथड एग्जैक्ट सेम है। पहले वेक्टर बी को शिफ्ट किया और अब देखा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा बन रहा है तो रिजल्ट बना दिया। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इस केस में क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 न्यूटन वाले को शिफ्ट किए, एक अजीब सा शेप का ट्रायंगल बनना था। तो अजीब सा शेप का ट्रायंगल को कैसा क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो पहले कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, द स्मॉलर वन, द स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ 5 है, तो बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लिए। बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला। अब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ब्लू वाला, द ब्लू राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बारे में सोचते हैं। ब्लू राइट एंगल ट्रायंगल में क्या समझ में आया, बेस का लेंथ कितना हो गया टोटल 1 और ये 3 तो 4, और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो गया 4। तो दो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 4 रूट 2। So the resultant force is 4 root 2 newtons. And what angle? Isosceles right angle triangle मतलब ये दोनों 45 है, तो 45 डिग्री। समझ आ रहा है? तो ये जो दो फोर्सेस है 1 and 5 न्यूटन, उसका रिजल्टेंट comes out as 4 root 2 newtons, 45 degrees from 1 newton. With respect to 5 Newton, With respect to 5 newton, उसका root come out 8 डिग्री होगा। क्या होगा उसके आंसर 45%। वो थ्रू इट, अगर जरूरत हो तो एक बार वीडियो वापस से देख लो। ये दो क्वेश्चन जो लास्ट में किए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ही अगला क्लास दे। The next class would be tomorrow. See you all. लेगा